Hi everyone. So let's continue our discussion on the next set of ecosystems that we'll cover here, which is your aquatic ecosystem. I've already given you the details of the forest ecosystem in the previous two videos. Please do check them. Let's start our discussion on the aquatic ecosystem firstly. So सबसे तो हमें पहले समझना होगा कि aquatic ecosystem होते क्या हैं. सो लाइक द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स वर द वंस जहाँ पर आपका लैंड पर जो है लाइफ सर्वाइव कर रही होती थी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम consisting of water as the main habitat. ठीक है, that is called as aquatic ecosystem. If you classify them on the basis of salt content, let's say firstly you will have the fresh water ecosystem, then you will have the marine ecosystem. I'll give you the explanations also because you will come across these terms time and again, so it should be better that you get clear with these terminologies right in the beginning. Next is your brackish water ecosystem. So in the fresh water ecosystem, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, it is fresh water. So here the salt content would definitely be minimal, very low here. So here what happens, the salt content is very low and it is always less than 5 ppt. What is ppt? Parts per thousand. What are the examples that you can have in the freshwater ecosystem? Lakes, ponds, pools, springs, rivers, जहाँ water flow कर रहा है, आराम से fresh है, and the salt content is not that much. Then if you talk about the marine ecosystem, so यहाँ पर जो आपका salt concentration है, it is equal to or above you would say that of sea water. सी वाटर से या तो बराबर होगा या तो थोड़ा ज़्यादा होगा. सो रफली जो है इट इज़ 35 ppt और अबव. ठीक है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हियर. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? लेट्स से द शैलो सीज and the oceans, open oceans. Now if we talk about the brackish, so we are moving like from minimal of the salt concentration towards having the higher salt concentration. So here what is happening, the brackish will be a kind of actually a mix one. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि it is minimal, very very less. ठीक है, यहाँ पे you are seeing it is still way more, like more than 35. अब इन तो we moved from the lower to the higher, but in between somewhere this 5 to 35 what you find is the brackish water ecosystem. So here what happens, the salt content will be between 5, so it is between 5 to 35 ppt. What are the examples? Estuaries, mangrove swamps, and you don't have to worry, we will talk on each of these in the times to come in the next classes, forests, etc. So these are divided on the basis of the salt content, the three major kind of ecosystem. Now once we understand this, we will also have to understand the kind of organisms which survive in the aquatic ecosystem. So let's say if you talk about the aquatic organisms, अब aquatic organisms में क्या होगा, they are classified on the basis of where they are occurring. So their zone of occurrence and how they are able to manage in those zones. Whatever organisms, flora, fauna, if you say so, they are definitely unevenly distributed because it will depend on the depth of water, the climatic suitability there, you would say, like in terms of temperature, etc. But still if we roughly try to classify them on the basis of where they are located, we will do it in these categories. So they might ask you these terminologies either as a definition or a correct or an incorrect statement. So please be very focused with the classification. So one category is your Newston. अब यहाँ पर क्या है? So they are unattached organisms
लिविंग एट एयर वाटर इंटरफेस, ठीक है। तो मतलब वाटर में बहुत डेप्थ पे दे आर नॉट लिविंग, जहाँ पर एयर और वाटर यू समहाउ द मिड portion and where there is interface, they are those organisms living there. So example, if you say so, for example you talk about, let's say, the floating plants, ठीक है. So some examples of the organisms might also be there who would be at the interface, or let's say above the interface, that would be okay, but somewhere near to the interface, ठीक है. तो either above water or below water or just near that surface it can happen, but they will not be into any depth of the water body, that you have to remember. So you can also just write that also, because it depends on what organism. So some will be there, some will be above, some will be below, maybe at top of interface or even at times beneath the interface. Next kind of organism that you will discuss here is your periphyton. पेरीफाइटन के केस में क्या है, दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच रिमेन अटैच्ड टू द स्टेम्स. सो दे आर अटैच्ड टू स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स, और दे emerge above the bottom mud. नीचे जो मिट्टी है उससे थोड़ा ऊपर रहेंगे, या फिर प्लांट्स जो हैं उनके साथ अटैच रहेंगे. एग्जाम्पल ऑफ वन काइंड ऑफ एल्गे, sessile algae, and some other similar kind of organisms. Just be familiar with the terms, that would be enough. Another is your term plankton. This too you must have heard n number of times in different contexts. Planktons will include both your microscopic plants, like algae, जो क्या होते हैं बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एंड एनिमल्स जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी पहले, इफ़ यू रिमेंबर, क्रिस्टेशियंस आपसे बात की थी, प्रोटोजोआ बात किया था. दे हैव ऑल कम इन द पेपर, CSE पेपर प्रीवियस ईयर. सो दे आर द जू प्लैंक्टन. So basically the animals and the plants both would be considered as plankton. So you have the example of the phytoplanktons also which will make their own food, algae, ठीक है, and zooplanktons also जो कि survive कर रहे होंगे in the water. Then यहाँ पर आप अगर बात करोगे तो they will be managed by, जैसा water flow रहता है उस हिसाब से वो अपने आप को adjust कर लेते हैं. Next is your nekton. Another term to be remembered here in the category of organisms is your nekton. So यहाँ पर जो animals होते हैं, they are the swimmer animals. They can swim. ठीक है. Of course they will be slightly large and powerful because they have to manage the pressure and the flow of the water current. So they have to overcome those currents. So यहाँ पर आपके insects भी हो सकते हैं, whale भी हो सकते हैं, any kind of organisms would be here which would be able to swim. And then you have benthos. So they are present in the बॉटम, बिल्कुल नीचे, बॉटम ऑफ वाटर मास. ठीक है. सो यू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल राइट फ्रॉम द एयर वाटर इंटरफेस till the bottom of the water mass is what you are able to see here in the different categories. Now these are the organisms, but then you will have certain conditions which will determine how they are able to survive, or let's say you would say that how will be they managing with the productivity. So we will also have to talk about, like when we started discussing about ecosystems initially, we did talk about certain factors, abiotic and biotic factors which would determine an ecosystem. Similar now goes for, and there I discussed about a term limiting factors, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें change हो सकती हैं. So now that context comes here. So you have to talk about the factors which will limit the productivity. So factors limiting the productivity of aquatic
habitats. What happens in this case? So सबसे ज़्यादा important limiting factors जो हैं वो क्या होंगे? That will be your sunlight and ocean definitely. जहाँ पर ये आपका aquatic ecosystem है. I hope you are able to remember when we talked about the terrestrial ecosystem. What two factors did we consider as the most important limiting factor? We talked about temperature and moisture or precipitation, right? Aquatic के case में what is it? Sunlight and ocean. This comes as a very clear hint for your prelims. This can be very handy in solving any kind of question. If you talk about let's say sunlight, तो जैसे जैसे क्या होगा, water में penetration होगा sunlight का, what will be there? The sunlight penetration will definitely decrease as and when you go below the water. ठीक है. अब जितना ज़्यादा depth पर जो है light will be available, so you can say that the depth to which light penetrates determine the extent of plant distribution. ये तो clear cut understanding वाली बात है कि how will you understand about the plant distribution? The depth, you know, to which the light is going to penetrate. Now when you see the details here, you will understand ki how much of the light is there, or let's say what kind of plant distribution is there. So you divide into two categories. So one becomes your photic zone. Now see, please, these terminologies are very important. They will come directly handy in your paper. So please do not take them lightly. Photic zone में क्या हो जाएगा? This is the upper layer of the aquatic ecosystem. और यहाँ पर क्या होगा? Upper layer up to which light penetrates. और यहाँ पर जो आपकी photosynthetic activity है प्रोडक्शन वाली, वो अपना होते रहेगी. ठीक है. सो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो होती रहेगी. नाउ हियर द डेप्थ ऑफ दिस जोन विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन कि वाटर कितना ट्रांसपेरेंट है, हाउ मच ऑफ लाइट इज एबल टू पेनिट्रेट और नॉट. तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक तो हो ही रहा है. डेफिनेटली रेस्पिरेशन वुड ऑल्सो देयर इन दिस पर्टिकुलर जोन, एंड दिस इज द वन वेयर लाइट आपका सफिशिएंट प्रेजेंट है, एंड यू विल हैव यू नो द मिक्स्ड पोर्शन जो कि आराम से आपको सफिशिएंट कंडीशन, सूटेबल कंडीशन it would be provided so that the organisms can sustain in this particular zone. Another kind of, actually photic is a term that is related to light. ठीक है. जैसे photosynthesis होता है ना, तो synthesis of the food in the presence of light, that is the key word related to photosynthesis. Similar is goes here because it is the upper layer, so light यहाँ पर available है, penetrate कर रहा है. So what could be the other zone? Definitely very easier to guess. That will be your aphotic zone. So like you have biotic and abiotic, similarly you will have photic and aphotic zone. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? If this is the upper layer, this becomes your lower layer of the aquatic ecosystem. यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो light penetration restricted रहेगा, which will also result in restriction for the plant growth. So plant growth restricted here. ठीक है. So photosynthesis नहीं हो सकता है, so only respiration will happen for the organisms that will survive here. तो it is you know below kind of at a lower level, जहाँ पे कि आपके पास light इतनी होती ही नहीं है. The light levels are not that high, which will aid in the process of photosynthesis. Respiration तो बिल्कुल होता रहेगा because the organisms who have to survive, they will anyways go with the respiration, तो उसमें कोई issue नहीं है. Next, if you talk about द काइंड ऑफ गैसेस की अगर हम बात करते हैं जो कि आपके वाटर उसमें प्रेजेंस है, तो वी विल टॉक अबाउट द डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओशन में आपको समझना होगा कि कितना पानी में जो ऑक्सीजन है नहीं है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो येस, इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑक्सीजन इज़ dissolved in water. हम जैसे एयर, लैंड पे जो हम रह रहे होते हैं, हाउ डू वी गेट इट? फ्रॉम द एयर. सो हियर ऑक्सीजन इज dissolved in water. Of course there will be variations in the concentration. ठीक है. कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, and it will depend on the factors
विच विल इन्फ्लुएंस द इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ द ऑक्सीजन, कहाँ से आ रहा है कहाँ पर जा रहा है. अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हो तो जैसे कि लेट्स से इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्रेश वाटर, तो यहाँ पे जो आपका एवरेज कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.0010% है, ठीक है, जिसको आप 10 पार्ट्स पर मिलियन भी बोल सकते हो बाय वेट, या 10 ppm बाय वेट. And how does the oxygen enter the system? So oxygen enters the aquatic ecosystem through air water interface. जो हमने पढ़ा था, एयर में तो मौजूद होता ही है, जहाँ पे उसका इंटरफेस होगा वहाँ से इट विल एंटर, बिकॉज देयर विल बी द photosynthetic activities of the aquatic plants. I hope you are able to relate. Let's say here is your water body, starting. तो ये आपका level है अपर, इसके ऊपर आपका पूरा air है. So we have seen that there are certain kinds of organisms जिनको हम न्यूस्टॉन बोलते हैं, who live at the surface or let's say above or below the surface. तो here you do have the plants and in that interface. तो plants हैं तो ऑक्सीजन तो हमें मिलेगा, तो वहीं से ऑक्सीजन पानी में आना शुरू हो जाता है, then it gets dissolved and further penetrates depending on the water का जितना level है उस पर. So definitely जो quantity होगी that will depend on the rate at which these two processes are going to happen. इसमें कोई issue नहीं होना चाहिए. And how would you say that it escapes from the water body? It definitely escapes through this interface only. जैसे आ रहा होता तो यहाँ से जा भी रहा होता है. तो entering का हमने देख लिया, escape भी देख लेते हैं. So dissolved oxygen escapes the water body through air water interface and through respiration of the organisms. अब चाहे fishes हो, zooplanktons हो, whatever, so that will also be there. So temperature would also be a factor that would determine the amount. So amount is also determined by the temperature. How? So oxygen is less soluble in warm water, ठीक है. तो ऑफ कोर्स जहाँ थोड़ा वार्मथ रहेगा वहाँ पर solubility ज़्यादा रहेगी. This point you can remember. And if the dissolved oxygen will go below 3 to 5 ppm, this will result in the death of some organisms also, because they will not get sufficient oxygen to survive. There are some other limiting factors also which do influence the organisms, like you have temperature, ठीक है. अब यहाँ पर जो वाटर का होता है टेम्परेचर, उसमें रैपिड चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू एयर. तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर ईजिली जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इधर गेट्स एडेड और लेट्स से इट इज़ टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम. सो ये एक प्रॉब्लम कर सकता है टेम्परेचर. अब यहाँ पर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बहुत ही कम नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट होती है. So even a small change in the temperature of the water, it becomes great threat to the organisms, ठीक है. Like हम जो terrestrial system पे रह रहे हैं, तो we can still manage with the temperature and we have mechanisms to manage, right? If there is winter, if there is summer, we somehow manage with that. So in the air it is still easier to accommodate and still sustenance जो है वो manage हो जाता है. But when you talk about the aquatic as compared to the terrestrial, even a small change would be problematic. So see, these are the conceptual questions which they can directly ask you in the paper, that you compare these things happening in the aquatic ecosystem and the terrestrial. Another is your transparency, another limiting factor if you say,
सो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स, क्या इफेक्ट करेगा, लाइट पेनिट्रेशन करेगा. सो इट अफेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन because there will be some suspended particles also in the water. Let's say you have clay, silt, etc. तो यहाँ पे वाटर उतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, दैट इज़ वेरी क्लियर. ठीक है. सो इट विल what will happen in this case, it will limit the extent of the light penetration and definitely the impact on the photosynthesis will also be there. So these are the informations about the basics of the aquatic ecosystem. Now there are many things that you have to see in detail, on which I'll have to make shorter videos for each of them. For example, we'll have to discuss the lakes in detail. ठीक है, lake ecology, how does it work, that you will be seeing in detail. Then you will also come across a term which is eutrophication. So I will explain you. जैसे आपने बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन पढ़ा था, सो दीज टर्म्स डू कम इन बिटवीन. सो सिमिलरली एक टर्म आपको यहाँ पर मिलेगा यूट्रोफिकेशन. ठीक है, जिस पर कि क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो यू विल नॉट ऑफकोर्स बी एबल टू इग्नोर इट. देन एल्गल ब्लूम्स, हमेशा इस पर क्वेश्चंस रहते हैं इन सम और दी अदर फॉर्मेट, ये हम करेंगे. वेटलैंड्स का डिटेल करना है हमें. ऑल ऑफ दीज आर कमिंग इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम. ठीक है, वेटलैंड्स के डिटेल को समझने के बाद what we'll try to do is the estuaries, estuary ecosystem, ये सब कुछ नाम अभी आपको मैंने एग्जाम्पल्स में बताए थे. You will also have to deal with the mangroves in detail, सब aquatic में है. फिर कोरल रीफ्स हमें पढ़ना है. द क्वेश्चंस ऑफन फिगर आउट फ्रॉम द सेक्शन ऑन द कोरल रीफ्स. तो ये सब तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहेंगे. एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फर्दर टॉपिक्स. तो अभी आपको दिख रहा है कि वी हैव अ लॉट टू कवर एज अ डिटेल इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम. दिस वाज जस्ट अ ब्रीफिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ द सिस्टम एग्जिस्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स, ऑर्गेनिजम्स एट्सेट्रा. सो यू नो दिस कैटेगराइजेशन यू शुड वेरी क्लियरली रिमेंबर, बिकॉज यही सब आपको डिटेल में करना है. आपको लेक्स के बारे में अलग से समझना है, मैंग्रोव्स, एस्चुरीज, यू नो आपको अलग से समझने हैं. सो वी हैव टू डू ऑल ऑफ दैट इन द कमिंग वीडियोज. थैंक यू सो मच गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर टिल देन. बाय बाय.